हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्मा सी। आज की इस वीडियो में हम एक क्रिटिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू रेस्पॉन्ड डिमांड नोटिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे ही टैक्स पेयर को कोई डिमांड नोटिस आता है, उनकी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। सो डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। So let's understand this in four parts. First, what is demand notice? Second, from where we can download this demand notice? Third, why demand notice has been issued? And fourth, how to make payment and submit a response. First, we understand what is demand notice. If income tax department find any discrepancy in your ITR, मीन्स आपने जो ITR में इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन की है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से मिसमैच है, तो रिमेनिंग अमाउंट के पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट आपको डिमांड नोटिस इशू करता है। सेकेंड, फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड दिस डिमांड नोटिस। तो इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, आपको डिपार्टमेंट से इस तरह का मेल आया होगा जिसमें कि लिखा होगा यू हैव अ डिमांड, और उसके साथ में डिमांड का अटैचमेंट होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद गो टू ई फाइल हेड इन इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक ऑन व्यू फाइल रिटर्न। हियर यू नीड टू चेक व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर ITR। जिस भी रिटर्न के अगेंस्ट में डिमांड है तो वहां मेंशन होगा प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू, और साथ ही उसका नीचे इंटीमेशन होगा। सो नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड इंटीमेशन एंड डाउनलोड द डिमांड। और थर्ड ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ई फाइल हेड गो टू पेंडिंग एक्शन एंड क्लिक ऑन रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। हियर यू कैन सी द ऑल डिमांड whichever is pending. Now click on download button and download the demand. In all three options, we required password for opening the demand. So your password would be your PAN number in small letter and then write your DOB in DDMMYYYY. Third, we understand why demand notice has been issued. डाउनलोड के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे ये तो कुछ ऐसा दिखेगा। डिमांड नोटिस दो लैंग्वेज में होगा, फर्स्ट हिंदी एंड देन इंग्लिश। और जिस भी सेक्शन के अंडर डिमांड नोटिस इशू हुआ है वो यहाँ मेंशन होगा। And here you can see the amount of demand. If we go down, here we can see two columns. In first column जो हमने ITR में इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन की है वो मेंशन होगी। इन सेकेंड कॉलम जो डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन की है वह मेंशन होगी। तो दोनों कैलकुलेशन में जहां भी मिसमैच होगा वह रेड कलर में हाईलाइट होगा। तो अब हमें यह देखना है कि डिमांड सही है या गलत। इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस पर आप एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। Fourth, we understand how to do payment and submit response of demand. Demand के payment के लिए we will go to respond to outstanding demand in pending action. Here we can see the demand. डिमांड नोटिस के रेस्पॉन्स के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप डिमांड नोटिस के अमाउंट पर फुली एग्री हैं, मतलब कि टैक्स डिपार्टमेंट ने सही डिमांड नोटिस जनरेट किया है, तो पहले आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और डिमांड का फुल पेमेंट करना है। क्लिक ऑन पे नाउ, अगेन क्लिक ऑन पे नाउ, click on continue. Here you can check the amount of demand, that is 1540 rupees. Then click on continue. Here you will get different payment options for payment. Select the option of payment and do the payment of demand and download the generated चालान। डिमांड नोटिस के पेमेंट के बाद में आपको सबमिट रेस्पॉन्स में जाके रेस्पॉन्स सबमिट करना है, अदरवाइज डिमांड नोटिस ओपन रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। और रेस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और सेकेंड ऑप्शन, अगर आप डिमांड नोटिस से पार्शियली एग्री हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिमांड है 1540 रुपीज की, बट आप 600 रुपीज के लिए एग्री है, तो आपको उसके लिए आपको पहले पे नाउ पे क्लिक करना है और 600 अमाउंट का पेमेंट करना है इंस्टेड ऑफ 1540 रुपीज। क्लिक ऑन पे नाउ, क्लिक ऑन कंटिन्यू। Then here you need to edit the amount. You are agree for 600, then mention the 600 and click on continue and do the payment of demand whichever you are agreed and download the generated चालान। उसके बाद पार्शियली एग्रीड के केस में आपको सबमिट रेस्पॉन्स में जाना है और रेस्पॉन्स सबमिट करना है दैट 600 अमाउंट यू हैव ऑलरेडी पेड एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट यू आर डिसएग्री, और उसका रीजन के साथ में रेस्पॉन्स करना है। और आपको कैसे रेस्पॉन्स करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अब थर्ड ऑप्शन है, अगर आप डिमांड नोटिस से डिसएग्री हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से डिमांड नोटिस जनरेट किया है
या फिर टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया है बट उस चालान को टैक्स डिपार्टमेंट ने कंसीडर नहीं किया है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आपको सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करके आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना है और आपको रीजन प्रोवाइड करना है। अब यह देखते हैं कि इन तीनों केसेस में, मतलब कि जब आप डिमांड नोटिस से फुली एग्री करते हैं या पार्शियली एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे रेस्पॉन्स करना है। इन फर्स्ट केस, व्हेन यू एग्रीड विद द डिमांड, क्लिक ऑन सबमिट रेस्पॉन्स। The demand is correct, so select the option is demand is correct, and then select yes we have already paid and चालान has same, because हमने चालान का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। Click on add चालान details. Here we need to provide the details of चालान. Type of payment was outstanding demand, as we have demand of 1540 rupees. BSR code of the चालान. So BSR code of the चालान is this 051002. Serial number. The चालान number is 18172. Date of payment is 16 August. And now we have to write remark with justification. So here we have agreed with demand, so we'll provide response like this. Demand of 1540 has been paid fully and attach the चालान copy. Kindly clear the demand notice. And in attachment, we will attach the चालान copy. Then click on save button. And now click on submit to submit your response to tax department. Now let's see how to respond in case 2 and in case 3 when you are disagree with demand in part or in full. Click on submit response. Now you will have to select this option disagree with demand either in full or in part. Click on add reason. So here you will get the list of multiple reasons. So select all appropriate reason for your partial disagreement with demand or fully disagreement with demand. Here I am selecting one, as I have already paid part of demand, that is 600 rupees. And selecting other because I have other reason for the disagreement. Click on apply. Here we can see both reasons have been selected. Now we need to provide all details and justification of both reasons. Click on reason 1. Here we need to enter the amount which is not payable because of this reason. So in my case it is 600 as we have already paid. Here we need to provide चालान details as I have already shown in case of fully agree with demand. चालान amount 600 as we have paid. BSR code, serial number, date of payment, and remark. Here you need to provide appropriate remark as per your case. Here I am writing remark as per my example. In attachment, you have to upload the चालान copy. Then click on save button. Here you can see the all चालान details which you have mentioned. If there is any error, click on edit button and edit the details. Now click on save. Now we can see reason 1 is completed. Now click on reason 2. Here we need to enter the amount which is not payable because of this reason. That is 940 remaining amount. In remark, we have to write justification why we are not agree with the demand. Provide proper justification why we are disagree with the demand of 940. And then click on save button. Now we can see both reason has been completed.
In payment summary, outstanding demand was 1540. Amount not payable is also 1540. Now our remaining balance is 0. While responding to demand notice, one thing always keep in mind that remaining balance should be always 0. Now click on submit button and submit your response. When you are disagree with demand in full, the same thing we need to do. Select this disagree and select the appropriate reasons for your disagreement. You can select the multiple reason for your disagreement and provide the justification. And after completing reason, click on submit button to submit your response to tax department. तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने डिमांड नोटिस का पेमेंट एंड रेस्पॉन्स कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.